Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Safety goes out the window at Miramar Children's Park. Broken swings, rusty seesaws and open electricity junction boxes threaten lives. At least 12 killed, 14 others injured after bus overturns and rolls over into a ditch in the Durg district of Chhattisgarh. Accidents continue to give citizens of Goa sleepless nights. Man fractures leg at infamous IOC circle in Vasco in motorcycle truck mishap. And now for the news in detail. Safety is paramount for all citizens, especially children. However, playgrounds and children's park in the capital city have become unsafe environments, raising concerns about the safety of children and accountability should something bad happen. Let's take a look at the children's park at Miramar Beach, a popular tourist destination. आता आमी आसा ते मिरामार बिचाचेर आनी हिंगा मिरामार बिचार तूं पळयत जाल्यार हिंगा भुरग्यांक शावपाचे धाकट्या भुरग्यांक प्ले हें करपाक स्विंग करपाक स्लायड बाय हिंगा जायत्यो आहा. तशेंच हिंगा आनीक जायत्यो 20-30 वर्सांच्यो स्लायड बांदलेल्यो आहल्यो कॉन्क्रिटाच्यो त्यो आजून लास्टींग आहा. पूण हे तुमी जर म्हाज्या फाटल्यान पळयत जाल्यार हे म्हाका दिसता वर्स जातले 1 year वो मे बी 2 years. पूण हे आतां स्लायड हिंगा हें बांदलेलें आहा, स्विंग हिंगा आहा. ते स्विंगाचे हिंगा ते भुरग्यांक आनी भुरगीं कशी स्विंग जातली ते तुमी हिंगा पळयात. ती आमी तुमकां आतां दाखयतात. हिंगा आतां म्हाज्या फाटल्यान पळय हे भुरग्यांचे धाकट्या भुरग्यांचे स्विंग हे स्विंगेचे स्टेटस पळय हिंगा कसो जाल्लो आहा पळय तो. हे स्विंगेचेर आतां भुरग्यांनी झेलपाचे स्विंग करपाचे वो कोणे स्विंग करपाचे ते अशें जाता. तेवूय सायडीक आनीक एक स्विंग आहा ही पूण ओके आहा. पूण हेजेर धाकट्या भुरग्यांक हें न्हू ही फकत व्हडल्यांनी हें करपाची. आतां हिंगा दुसरी स्विंग आहा फकत धाकट्या भुरग्यांची. ही तुमी हिंगा धाकट्या भुरग्यांक हिंगा सेफ्टी कितें आहा ती पळया हिंगा. ही आतां धाकट्या भुरग्यांची आनीक एक स्विंग. सो हिंगा एक करपाक कोत्ता पूण तेंचे मेंटेनन्स कांय ना. कोण मागीर ते येवन चॅक करना. हेंचे बेल्ट पळय हे कशें आहा ते आनी हिंगा धाकट्या भुरग्यांक हितून घालीत जाल्यार हिंगा कितें जातलें आनी ते स्विंग जातलें ती कशें ती पळया तुमी. आनी हिंगा आतां ते सायडीक तुमी पळयत जाल्यार एक आनीक हे ते मॉडर्न पडलेलें आहा. हे सायडीक हिंगा आनीक भुरग्यांचें हें पडलेलें आहा स्लायड हे सायडीक. सो हिंगा कांयच हें सारकें ना. भुरग्यांची सेफ्टी ना. हे कित्याक केल्लें आनी हेंचे मेंटेनन्स कोण करना. कोणाचे पयशे हे बेस्टेज क्वॉलिटेड स्टँडर्ड वर्क ना. आतां हे स्मार्ट सिटीन केल्लें वो ट्युरिजमान केल्लें तेवूय आमकां खबर ना. हे आतां हिंगा पळय तुमी भुरग्यांचे हेका कोण आवय बापूय ना. सो हे कशें जालें हें युजलेस जाल्लें आहा. हे आनीक थोड्या दिसांनी मातशें हें करीत जाल्यार कोण स्क्रॅपर कोण आहा ते येवन घेवन वयतले. सो हेजें कांयच खंयचेच पळय स्टेटस कसोच कितें हें कांय हें ना. सो हे कोणाक यूजूय करूंक मेळना आनी थोड्या दिसांनी कोण स्क्रॅपर आहा पळय ते येवन हें घेवन वयतले. ह्याचेर पळया हिंगा एके सायडीक सीट आहा एके सायडीक सीट ना. सो हेजें मेंटेनन्स कांय ना. आतां हिंगा भुरगीं तर बसलीं तरी आसतना हेजेर तर बसलीं हिंगा हे भुरग्यांक हातीक लागपाक चान्सीस आहा. हिंगा ही भुरग्यांची सेफ्टी ना. हे ओदीक बरें म्हाका दिसता काडलेलें बरें ते हिंगा सांडल्या परस. हिंगा तुमी हें पळयात एका टेरास्टेड जाल्लें आहा. हे केन्ना हिंगा भुरग्यांच्या हेका लागतले हातीक लागत ते सांगूंक जायना भुरगीं हिंगा बसलीं जाल्यार. सो भुरग्यांची सेफ्टी हिंगा ही कांयच ना. हे आतां दुसरें हिंगा आहा पळय ते हिंगा एका हँडल आहा पूण सीट ना. सो तेजी हँडलां मोडलेलीं आहा ती कांय सेफ. हे पळय तुमी एक मातशें हें आहा सुमाराचें हेजेर बसपाक हें आहा पायप आहा पूण एके सायडीक सीट ना. सो आतां हिंगा पळय तुमी पळयात निग्लेजन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. हिंगा आतां मिरामार सगळीं जाणां हिंगा भुरगीं येता पळय ती हें आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिटर बॉक्स आहा हिंगा सगळे स्विच ओपन आहा पूण पळय कशें नासता ती देरां हिंगा ओपन आहा तेका लॉक ना. हिंगा कांय सिस्टमूच ना. हिंगा आतां कितें भुरग्यांनी हितून भितर हात घालपाचें. हिंगा बील लायटीचें बील घाल्लें हें केल्लें आहा तें आतां बील कोणें घालना तेणें ओपन सांडलें. आतां फकत मात एक गेम जातली एकामेकाचेर घालपाचें ते बील कोण घालूंक गेलो तेणें ओपन सांडलां आसतलें म्हण. पूण हें सकयलें बॉक्स कोणें ओपन सांडलें तेका बील वयर घालपाक सांडलें तेणें वयलें बॉक्स ओपन केलां. हें सकयलें कोणें ओपन केलें. सो अशी एकामेकाचेर घालपाची हेंच्यो सगल्यांच्यो गेमी चालू आसतल्यो मागीर. हे तुमी पळयात ही आतां भुरग्यांची सेफ्टी मिरामार बिचाचेर पळय हिंगा भुरगीं बाय येता आसतलीं. हे वायर हिंगा पळय ओपन कशें सांडलेलें आहा. सो हिंगा आतां भुरगीं तर येवन शेवतलीं इवनींग
मॉर्निंग टायम हे भुरग्यांची सेफ्टी हिंगा पळय हे वायर कशें हें केलें हिंगा सेफ्टी प्रिकॉशन कांय घेतलेलें ना हिंगा कोणाचें पडलेलें ना हारून घातल्या घाल म्हणून घातले आसतले पूण सेफ्टी प्रिकॉशन कांय ना वायर सगळे ओपन हिंगा वता भुरग्यांची सेफ्टी कितली आहा ती पळय तुमी ल्हान भुरगीं हिंगा शॉक लागली जाल्यार तेंचें कितें जातलें हिंगा शॉक येवन कित्याक केन्ना ऑन आसता आनी केन्ना ऑफ आसता ती कोणाक खबरच आसना. Vincent Rosario, Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The alarming frequency of accidents in the state has become an unshakable nightmare. Even more concerning is the apparent lack of action from state authorities to address the issue. It often takes a major fatal crash to elicit any response from officials, prompting many to question why preventive measures are not being implemented. Here's our reporter Hiru Mahale with one such story from Vasco. वास्कोन जायते एक्सिडेंट जावपाचे चालूच आसात आणि अशेच एक्सिडेंट आयज हे IOC जंक्शन ह्या जाग्यार जाल्लो आसा. ह्या एक्सिडेंटाचें कारण म्हटल्यार हो IOC जंक्शन हा हो खंय तरी एक डेड ट्रॅप जाल्लो आसा कित्याक की हांगा जे पोर्टांसून हेवी व्हेहिकल्स येतात टँकर्स येतात ज्यो व्हडले ट्रॉलर्स येतात ट्रेलर्स येतात हेंच्या खातीर खंय तरी एक्सिडेंट वाडलेलो आसा आणि हो IOC जंक्शन हांगा टर्न मारपाक जाय तो त्रास जाता बिकॉज हांगा जर एक व्हडली हेवी व्हेहिकल येयली म्हाज्या फाटल्यान तुमी ही आतां गाडी पळोवंक शकता की कशा तरेन टर्न मारता आणि जे बायणां सडा ह्या वाठारांत ज्यो गाडयो येता ह्या फाटल्यान ह्या अश्यो गाडयो येता तेच्या खातीर एक्सिडेंट जावपाक लागला आसा. लोकांक हांगा वाट वचचें पडटा आनी आयज अशेंच एक्सिडेंट जालो एक बायक आनी एक टँकरा मदीं आनी जेजून बायकर जो आसलो तेचो खंय तरी पाय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा ताका खंय तरी GMCन व्हेल्लो आसा आनी हो टँकरचो टायरूय फुटलेलो आसा. म्हणजे कितके स्पिडीन ह्या जाग्यार हो टँकर वयतालो हें चिंतून शकता कित्याक की हांगा टर्न मारपाक आसतना तेजो टायर फुटलो कित्याक की तेणी ब्रेक मारलो म्हणजे तो स्पिडीन आसलो अशें कळोन येता आनी जो बायकर आसलो तो पाय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. पूण सद्या तरी हो जो जंक्शन हो एकदम डेड ट्रॅप जाल्लो आसा. ज्या परेन हो ब्रिज जायना फ्लायओवर जायना त्या परेन हांगा लोकांक जायते त्रास भोगचे पडटले आनी हांगा एक्सिडेंट कंटिन्यू उरतले. तेच्या खातीर हांगा पुलीस डिप्लॉय करपाची गरज आसा. तशेंच जे टँकराचेर क्लिनर आसपाची गरज आसा आनी जे हांगा MPTन कितें तरी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाची गरज आसा. पळय हांवें गव्हर्मेंट जे अथॉरिटीज आहात न्हू तांकां पयलींच शिटकावणी दिल्लेली हे जे सर्कल आहा न्हू हे डेंजरस सर्कल म्हणून कितें आनी लास्ट टायम आमी हांगासर बोळ सुद्दां मारलेलो की हांगा गाडये जे टर्न मारतात ते फाटीं फुडें पळयना म्हणून. आतां हो जो तेंच्यांनी आतां न्यू फ्लायओवर बांदपाचो इनिशिएटीव घेतला आमदारान सांगलेले वास्कोचे आमकां हो जाता इतले बेगीन आपूण करून घेतलो म्हणून गेले सप्तकाच्या पयलीं सांगलेले आतां दुसरो सप्तो येयलो तरी पूण हो फ्लायओवर कंप्लीट जायना. वॉर बेजीस हे काम जावपाक जाय आसलें दीस आनी रात. जर सपोज तुमी लोकांक जर इनकन्विनियन्स दिता न्हू हे वॉर बेजीस काम जावपाक जाय आसलें आनी आयज हे सामान्य मनीस मुरगांवचो आनी वास्कोचो भोगता. आतां म्हाका एक सांग खंयची बायल शाळेन वयतना परत परत सांगला भुरग्यांक शाळेन सोडपाक लोक हांगाच्यान वयता म्हणून ल्हान भुरग्यांक घेवन त्या टायमाचेर एक्सिडेंट जावन कोण मेलो जाल्यार कितें करता. आयज तें जालां हांगासर हे रक्त पळय रे हे रक्त पळय रे हे रक्त आमचें सरकार पिता म्हणटा ते हे रक्त सामान्य मनशाचें हे रक्त कितें आनी ह्या टँकरांक इतली घाई कित्याक हे पुलीस तांकां विचारपाक शकना. हांगा पुलीस जाय आमकां कंपल्सरी 24 आवर्स जाय. थंय ब्रिजाचें काम चालू आहा हांगा ब्रिजाचें काम चालू आहा म्हटल्यार हांगा पुलीस नाका तलाव घालतले फक्त तलाव घालतले. हां अरे तुमी मेले न्हू आमच्या मड्यार उठले रे आनी मड्याचेर पयशे करपाक उठले. आतां हे टँकर इतली घाई कित्याक वयर काडपाक जाय चोरपाक जाय वयर चोरूंक जाय. आमदारांक दिसना फुटल्या आमदारांचे दोळे हायवेचेर चोरपाक जाय हायवेचेर चोरूंक जाय हे पुलिसांक दिसना. हांवें सांगलेलें पयलींच्या पियाक हे चल्लां तें बरें न्हू म्हणून कितें ही फक्त कांय ना ही गडबडी चोरपाची आनी कांय ना. हो सारको कंटिन्युअस IOC जंक्शन म्हणल्यार सारको वास्कोकारांचो आमचो मेन जंक्शन फ्रॉम मुरगांव तालुक्याचो म्हणल्यार आतां चड्यावयल्यान नाक्यावयल्यान लोक सगळे येता बायणाचे लोक येता. हेवटेन म्हणल्यार इतले जागृत आसपा जाय. येदे व्हडले MPT 9 नंबराचो टँकर व्हडले ट्रक येता आनी इतले टन घेता आमकां इतले त्रास जाता टू व्हिलरवाल्यांक. खरो म्हणजे हेवटेन एटलिस्ट 16 वर तरी ट्राफीक पुलीस वचपाकूच जाय आसलो. आयज कोणाचो सकाळी पांय गेलो जाल्यार कोणा जीव गवोंक शकता. हाका जबाबदार कोण प्रशासन हेची जबाबदारी हेची घेवची आनी बेगितले बेगीन एक अशें वास्कोकारांचे एक आतां आमी फक्त देव दामोदर आहा म्हणून आमचो टायम बॉम्ब सिटी आमी रावता प्रशासना कडेन की ट्राफीक पुलीस हेवटेन कंटिन्यू एटलिस्ट बिजी अवर्स वयता आनी दनपारचे आसता सांजचे टायम नेमणूक करचो आनी कंटिन्यू दवरचो. Hiru Mahale, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Bargi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back.
Stern reprimands were handed down to the officials of the Uttarakhand Licensing Authority and leaders of Patanjali Ayurved by Supreme Court on Wednesday over the misleading ads published by Patanjali Ayurved. The top court even refused to entertain an apology from the firm. Here's more on this. The Supreme Court did not mince words today as it chastised the Uttarakhand Licensing Authority for its inaction against Patanjali Ayurved. Justices Hima Kohli and Hasanuddin Amanullah pulled up officials for delaying actions on complaints against Divya Pharmacy since 2018. The court's criticism didn't stop there. Justices Kohli and Amanullah refused to accept apologies from Yoga Guru Ramdev and Patanjali's Managing Director Balkrishna over misleading advertisements. In an unusually stern rebuke, the court questioned the sincerity of the apologies, stating they seemed insincere, especially given the past conduct of the individuals involved. Senior advocate Mukul Rahatogi, representing Ramdev and Balkrishna, faced the court's wrath as the bench declined to accept their apologies, citing a willful and deliberate violation of previous orders. Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. At least 12 passengers were killed and 14 injured after a bus overturned and rolled over into a ditch in the Durg district of Chhattisgarh on Tuesday night. Here's more. Durg Collector Richa Prakash Chaudhary said 12 passengers were killed and 14 grievously hurt after the bus packed with workers fell into a ditch in Durg. Chaudhary informed that those injured have been shifted to hospital while efforts were still underway to rescue passengers who are still trapped. The cause of the accident is yet to be ascertained. कुम्हारी में केडिया डिस्टिलर्स के मजदूरों की जो बस थी वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे एक खाई में सड़क के किनारे गिरी है, जिसमें 12 लोगों की अभी तक डेथ कंफर्म हुई है। 14 लोग अस्पताल में एडमिटेड हैं। हमने 2 लोग यहाँ पे एपेक्स में एडमिटेड हैं, बाकी सबको एम्स में हमने रेफर कर दिया है। सभी स्टेबल कंडीशन में है। एम्स के डायरेक्टर से और एपेक्स के जो अस्पताल के संचालक हैं उनसे हमारी टीम संपर्क में है। उनको बेस्ट पॉसिबल केयर हम अवेलेबल करवा रहे हैं। जो एक्सीडेंट के कारण है क्या रहा है उसके लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन हम कर दे रहे हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगी, जो भी परिस्थितियां होंगी, उसके आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए, कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला वैसे ही पूरा प्रशासन वहाँ, कलेक्टर, एसपी सब पहुँच गए। और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं और इस घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त किए हैं और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। अभी 10 पेशेंट को देखे हैं, जिसमें 2 पेशेंट, जिसमें से एक ज़्यादा उनकी स्थिति क्रिटिकल है, बाकी ठीक हैं और सबका समुचित इलाज होगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपया कंपनी दे रहा है और मृतक परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे रहा है
और जो इलाज यहाँ बेहतर होगा उसका भी कंपनी और सरकार वहन करेगी। इसके लिए न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई भी दोषीदार इसमें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इस पर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू। मैं स्थानीय विधायक आदरणीय कोरसेवाड़ा जी, आदरणीय यादव जी, हम सब यहाँ आए हैं। कलेक्टर, एसपी, जो प्रशासन के मुखिया वो भी आए हैं। सबको चिंता है, ये दुर्घटना बहुत दुखद है। इस मार्ग पर अब केडिया की गाड़ियां न चलें, कंपनी को निर्देशित किया गया है। कंपनी को यह भी कहा गया है कि आप इसमें ग्रुप इंश्योरेंस आपका क्या है उसका भी हिसाब बताएं। जो बस एक्सीडेंट हुआ है उसका अभी फिटनेस भी लाइव है और उनका इंश्योरेंस भी लाइव है, तो वो एक सहयोग और लोगों को हो जाएगा। कंपनी को स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक परिवार को एक नौकरी देनी है और प्रशासनिक ढंग से कैसे कंपनी से किसी को असुविधा ना हो इस तरह से चले, इसके लिए एक बैठक तुरंत ही निर्धारित की गई है आदरणीय विधायक महोदय के नेतृत्व में, जिसमें प्रशासन भी होगा, कंपनी का मैनेजमेंट भी होगा और स्थानीय कुम्हारी के लोग होंगे। तो कुम्हारी से हैवी व्हीकल उनके न चलें। इस रास्ते पर भी बैरिकेड लगाना, पोल लगाना, हॉरिजॉन्टल बैरिकेड लगाना और एक बैरिकेड ऐसा लगाना कि बड़े वाहन अंदर ना आ सकें इस लाइन पर, छोटे वाहन ही चलें, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ पाया क्या कि क्या रीजंस होंगे जिसके? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मजिस्ट्रियल जांच की बात हो गई है, वो होगी। अभी जो थोड़ी सी बात समझ में आती है, अभी ड्राइवर जो इसके थे बस के, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि लाइट बंद हो गई है मौके पर बस की। अब वो क्या कारण है, कैसा कारण है, स्पष्ट होगा बाद में। सृष्टि अथानेकर and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Cristiano Ronaldo finds himself in hot water after receiving his first red card in Saudi Arabia, leading to a 2-game suspension. Let's dive into the details. The football legend faced a moment of controversy during Al Nassr's clash against Al Hilal in the Saudi Super Cup semi-finals. Ronaldo, representing Al Nassr, was given his marching orders in the 86th minute for elbowing Al Hilal's Ali Al Bulai. Video footage captured Ronaldo appearing to raise his fist towards the referee before sarcastically applauding the crowd as he exited the field. This isn't Ronaldo's first disciplinary issue in Saudi Arabia, as he previously received a 1-game suspension for an alleged offensive gesture during a Saudi Pro League game.
Subhashish Govekar and Sanika Navgekar for Goa 365. And lastly, for the weather, there was a slight dip in the mercury value on Wednesday. Most areas registered a high of 33 degrees Celsius, a significant deviation from the normal 35 and 36 that we've been seeing. Even so, because of the unprecedented humidity, the real feel was around 40. We aren't expecting respite from this heat anytime soon. Thursday is likely to be on the windier side, but the northerly winds will increase humidity and consequently temperatures too. The high is forecast as 34 and the low as 24 on this humid day. Once again, we are warning citizens to spend the afternoons indoors and to keep up the intake of water and electrolytes. Temperatures this high are dangerous not just for young children and elderly folk, but also for seemingly healthy adults. Hotter weather takes over this week. Partly cloudy skies are expected on Thursday. Temperatures remain above normal. Maximum and minimum temperatures on Thursday 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Northwesterly winds are likely to increase humidity and temperatures. Early morning commuters want to stay alert for fog and light haze. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.